Hi everyone, this is Pratap Singh and you're watching The Journey of Lockdown. Welcome back everyone. Today we are going to talk about coronavirus and as we know it, COVID-19 and also how migrants have been affected with this lockdown in India. Starting with, let's have some brief knowledge about COVID. This virus family causes illness ranging from the common cold to more severe diseases such as SARS, that is Severe Acute Respiratory Syndrome, and Middle East Respiratory Syndrome, MERS, according to the WHO. They circulate in animals and some can be transmitted between animals and humans. Several coronaviruses are circulating in animals that have not yet infected humans. The new coronavirus, the seventh known to human, does affect us, and this has been named as COVID-19. Now let's go through the symptoms, what all it could cause. Common signs of infection include fever, coughing, and breathing difficulties. In severe cases, it can cause pneumonia, multiple organ failure, and death. We have seen a huge number of deaths in India. The incubation period of COVID-19 is thought to be between 1 and 14 days. It is contagious before symptoms appear, which is why so many people get affected. Infected patients can also be asymptomatic, meaning they do not display any symptom despite having the virus in their system. And that's dangerous, as well as it's something not known much about. Now, where did it come from? We all have the name China in our mind, and that's absolutely right. China alerted the World Health Organization to cases of unusual pneumonia in Wuhan on December 31st. COVID-19 is thought to have originated in a seafood market where wildlife was sold illegally. On February 7th, Chinese researchers said the virus could have spread from an infected animal to humans through illegally trafficked pangolins, prized in Asia for food and medicine. Scientists have pointed out to either bats or snakes as possible causes and sources. So that was about coronavirus. Now moving forward, how did it affect the migrants in India? The first lockdown in India was announced in March, which was supposed to last till April, but then later it was extended. And in that extension, most of the migrants and the low-wage workers who had taken rides or either were temporarily settled in different states in order to have job, food for their family, they were stuck with no jobs. In fact, they had no other option, rather mode of transportation to get back to their villages or their cities from where they belong. The migrants and the low-wage workers were stuck. They had no other options rather than to find a way by themselves in the starting period, rather. One such example is of Sanju, who is from a small village in Uttar Pradesh, who lived in Mumbai with his family. They moved to Mumbai because of they being from the low caste and they were being oppressed at their place, so they thought that moving to a bigger city might get rid of the fact that they belong to a lower caste. That did. They had jobs. They were well sufficient enough to feed their family. But as soon as the lockdown started, they had one tuk-tuk on loan. So once the lockdown was initiated, they had no other option to go back to their village. So they chose tuk-tuk as a ride because prior to that they booked railway ticket in the special trains that were being run during the coronavirus crisis. But unfortunately they didn't get the ticket. So they took a ride on their tuk-tuk. That was a 1500 kilometer ride. So they faced a lot of challenges while traveling back to their village, but that soon was ended. They were around 200 kilometers away from their village. They had already covered approximately 1200 kilometers by then.
Then later that morning, when they were supposed to make the final stretch, they they were hit by a truck, and the mother and her daughter died in that accident. And fortunately or unfortunately, the husband, the father, and his son were saved. The family still mourns that if they would have had the chance, that if their ticket would have got reserved in that special train, the situation would have been different now. But it's fate, and it has done wrong to them. See, uh, while reporting distressed migration from rural areas, I come across many migrants making a powerful statement that distressed we are in cities, but we escaped the social regression of caste system imposed on in the village. Not that the only village practice the great Indian genetics caste hierarchy, but the poor who belong to the lower hierarchy in the system suffer the most. These are the people who migrate out in distress the most. They grow up with social distances. These situations never create the right opportunity for them and keep them always at mercy of a wealthy few. They move out of their places because of it and finally become the migrants. See, this is just a backdrop that why does this happen? We all have seen. I was in Delhi back then when the COVID lockdown was imposed. I have seen thousands of daily wage workers, migrants, walking with their bags in their hand and their on their head with their family in that Delhi summer, where even a bird without water would die. They have faced a lot. They they have, yes, they faced a lot. They they did get the midway homes where they could take rest and everything, but that wasn't gonna give them money, food to eat, place to shelter their family. Or even if you talk about shelter, how do you think that without money a daily wage worker would get his life back on his feet? Everyone understood that the COVID situation has caused some of the mishaps in everybody's life, but they suffered the most. They had no source of income, rather, they were not even in their homes. See, this was a crisis, the crisis that everybody had to deal with. This could have been a bit more planned rather than just enforcing it on people. Okay, I understand. Middle class and the upper class society could have managed it well, and they did manage it well. They had some points for themselves, and the money that they saved, they have been using it ever since. But the lower caste people don't have that much amount of saving that they could use it for a long term benefit. Government could have planned a better way in which they could have got some sort of recession or a specific amount in their accounts with which they could have been helped. I think there could have been better things enforced rather than being oppressed. Hello everyone, myself Nivesh Sharma from Nimranagar, Haryana, and I am here to explain you the topic, the story of the lockdown. And my social topic will be the crisis faced by farmers during the lockdown. And hereby, so I will explain you the topic. And as I am from the farmer family, it will be easier for me to explain you this topic. And I have also seen all these crises faced during the lockdown. So let's begin. अप्रैल 2020 में लॉकडाउन श्री नरेंद्र मोदी जी के थ्रू अनाउंस किया गया था। पूरे देश भर में लॉकडाउन लग गया था। सारी मार्केट्स, सारा हाईवे, सारे रोड्स बंद कर दिए गए थे। कुछ भी नहीं खुला था।
और ये पीक टाइम, अप्रैल जो मंथ होता है वो पीक टाइम होता है गेहूं के बिकने का। गेहूं, वीट वीट के बिकने का ये पीक टाइम होता है। इस टाइम तक सबकी गेहूं निसर चुकी होती है। इस टाइम तक हम सारे गेहूं को बेचने के लिए सारे मंडियों की तरफ निकल जाने के लिए तैयार रहते हैं। और एकदम से लॉकडाउन अनाउंस हो गया, मार्केट्स बंद हो गई, मंडियां भी बंद हो गई, तो कुछ भी खुला नहीं था। तो अब इस टाइम में सबसे ज़्यादा दिक्कत आई थी हम सबको, क्योंकि अब लेके जाएं तो कहाँ लेके जाएं, स्टोर करने की इतनी जगह नहीं होती लोगों के पास। हमने फिर भी कर ली थी स्टोर काफ़ी हद तक, लेकिन कई फार्मर्स जिनके पास 2 या 3 किले ही होते हैं ज़मीन के, वो कुछ भी नहीं कर पाए थे स्टोर। हमारे इवन हमारे गांव में एक बंदे ने नदी में फेंक दी थी अपनी गेहूं। 1 हफ्ते तक वो मंडी के बाहर खड़े रहा था, पुलिस ने उसे मारा वगैरह, बाहर भेज दिया, जो भी करा। तो गुस्से में आके उसने ये सब कर दिया। अब करे तो क्या ही करे वो भी बेचारा। तो दिक्कत बहुत आई थी। एकदम से माइग्रेंट्स सारे अपने स्टेट्स में जाने की तैयारी में लग गए थे, और कोई वर्कर नहीं रहा था। अब अगली खेती की भी तैयारी करनी थी, क्योंकि अब जितने भी डिपेंडेंट थे इनकम के लिए अगली खेती पे ही थे। अब कुछ रहा ही नहीं था हमारे पास करने के लिए। तो वो अगली खेती की तैयारी करने लग गए। तो वर्कर्स भी नहीं थे जो करे, क्योंकि इसके बाद लगती है, चावल लगते हैं इसके बाद बेसिकली, क्योंकि जून जुलाई तक चावलों को पानी की नीड होती है, और उस टाइम तक बारिश हो जाती है शुरू, तो इजीली रहता है चावल उगाना हमारे रीजन में। और चावल में एक एक पीस अलग अलग मतलब वो लगाना पड़ता है, तो उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है वर्कर्स की। सारे साल में उस टाइम तक ऐसा हो जाता था कि वर्कर्स की शॉर्टेज हो जाती थी एक तरीके से। पर इस साल थे ही नहीं वर्कर्स, सारे के सारे अपना चल दिए थे। और कुछ जो जाने पाए थे उनको उनसे भी ज़्यादा दिक्कत आई थी, क्योंकि जो वर्कर्स थे वो डेली इनकम पे डिपेंडेंट होते हैं। और अब डेली इनकम कोई रही नहीं, क्योंकि वर्कर्स आ ही नहीं रहे थे। हमारे गांव में जो 2-3 गांव पहले से जो वर्कर्स चलने की तैयारी में थे, वो उन्होंने फिर डिसीजन लिया कि जाएंगे नहीं अब। तो उन्हें फिर भी हमने बिठा दिया, मतलब वहाँ पर रुके हमारे गांव में, तो उन्हें एक घर था वहाँ पर उन्हें रहने के लिए दे दी जगह हमने। तो हमने उनसे पूछ भी लिया था कि चावल वगैरह लगा दोगे या हेल्प कर दोगे, तो कर दी उन्होंने, मान के चलो, क्योंकि उनको भी इनकम की ज़रूरत थी और हमें भी। जब चावल लग गए उसके बाद हमें कोई नीड तो थी नहीं उनके, हमें हमने फिर भी रहने दिया। तो उस टाइम तक हम देख रहे थे जो दूसरे माइग्रेंट्स जो जा रहे थे उस रीजन से, मतलब उधर से आके या हमारे गांव के थ्रू जा रहे थे, उन्होंने घास काट के उसकी सब्जी बना रहे थे। और मतलब सबको इतना ज़्यादा हर्ट हुई ये बात कि अब यार इतना ज़्यादा वो बुरी हालत में है, तो उन्हें खाना वगैरह राशन वगैरह पकड़ा दिया हमने कि ये सब लेके चले जाओ। तो अब करे तो क्या करे, कुछ भी नहीं था उस टाइम, कुछ भी नहीं वर्क कर रहा था, लेकिन फार्मर्स को फिर भी खेती करनी पड़ी, अपने पल्ले से करनी पड़ी, जो भी करा। अब करें तो क्या करें, फर्टिलाइजर्स अवेलेबल नहीं थे। गेहूँ वगैरह कैसे, चावल वगैरह कैसे उगेंगे बिना फर्टिलाइजर्स के। तो अपने आप ही करना पड़ा सारा कुछ। चलो अरेंज हो गया फिर भी। गवर्नमेंट ने फिर क्या करा, इंटरस्टेट ओपन कर दिए थे, मंडीज ओपन कर दी। पर कुछ रूल्स की वजह से जा नहीं पाते थे। और मंडीज इंटरस्टेट चलो ओपन थी हमारे यहाँ पर, तो अगर चले भी जाते थे, पेट्रोल पंप्स वगैरह, पेट्रोल वगैरह अवेलेबल, डीजल अवेलेबल नहीं था। और पुलिस इधर से उधर जाने नहीं देती थी, क्योंकि कई स्टेट्स में नाइट कर्फ्यू था, हमारे हरियाणा में भी था नाइट कर्फ्यू। अब निकले तो कब निकले, दिन में अलाउड नहीं था ट्रक वगैरह जाना। तो अब क्या ही करते, कैसे ही जाते। फिर भी दिक्कत आई। जिनके पास 1 या 2 किले होते हैं जमीन के, उनका सारा डिपेंड होता है उनकी खेती पे। अब अगर उनकी एक टाइम भी खेती खराब जाती है ना, उनका सारा साल खराब हो जाता है, क्योंकि अगली खेती उनकी पिछली खेती डिपेंड करती है। अगर इस बारी खेती में उनको नहीं मिली कोई इनकम, तो अगली खेती उनकी खत्म, कुछ भी नहीं रहा। तो कईयों को बहुत ज़्यादा, मतलब बता नहीं सकता, मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता कितनी दिक्कत आई थी। अभी भी जब भी मंडी खुल भी गई है तो भी खरीद नहीं रहे हैं लोग, क्योंकि वो कह रहे हैं प्राइसेस का कोई वो रहा ही नहीं, प्राइस इतने ज़्यादा हाई हो गए थे, अब खरीदें तो क्या खरीदें। मतलब जो आड़ती थे वो खरीद ही नहीं रहे थे, वो ज़बरदस्ती बेच नहीं सकते थे, करें फिर क्या करें।
बहुत ज़्यादा क्राइसिस हुए, फार्मर्स को सबसे ज़्यादा दिक्कत आई। उसके बाद चावलों के बाद हो गया चलो, फिर उसके बाद सर्दियों में सब्जियां गेहूँ ये सभी उगता है, तो फिर भी सब्जियां उगा दी। उसके बाद गवर्नमेंट ने रूल बना दिया कि आड़ती वगैरह नहीं रहेंगे अब, और प्राइवेट कंपनीज या जो भी रूल बना है, मैं बता नहीं सकता ऐसे वो। तो उसमें बहुत दिक्कत आ गई, फिर से नहीं खरीद रहा कोई। तो इस लॉकडाउन, मेरे हिसाब से इस लॉकडाउन का बहुत ज़्यादा क्राइसिस फार्मर्स के ऊपर पड़ा है। और इंडिया का एक्सपोर्ट सारा राइस और इनका होता है मेनली, और इस साल एक्सपोर्ट बिल्कुल भी नहीं हुआ, तो कुछ कह नहीं सकते क्या क्या क्राइसिस हुए। बहुत ज़्यादा लॉस हुआ इस साल।